जी हाँ, मेरा सवाल मुकेश जी और विष्णु जी दोनों से है। मुकेश जी, आपने अभी अभी कहा कि ये एक माइथोलॉजी का जो सब्जेक्ट था उसको हिस्टोरिकल में कन्वर्ट करना आसान नहीं था। तो आपने स्टोरी के लेवल पे और डायरेक्शन के लेवल पे और ख़ास तौर पर इतनी बड़ी स्टार कास्ट, तो कितनी डिफ़िकल्टी आई इस चीज़ को लेके कि सबको प्रॉपर स्पेस भी मिलना चाहिए और हिस्टोरिकल लगे फिल्म, न कि माइथोलॉजिकल। आपने पूछा कि कितना मुश्किल था। मुझे लगता है कि हम सबको भगवान शिव ही पार लगा रहे थे और तभी इतनी बड़ी फिल्म, इतने बड़े स्टार कास्ट के साथ, इतने बड़े कैनवस की फिल्म इतनी आसानी से पूरी हो गई कि हमें पता भी नहीं चला। और जैसा मधु जी ने कहा कि हमने बिल्कुल हंसते खेलते बिना किसी स्ट्रेस के इतने प्यार से, इतने अच्छे ढंग से बनाया कि ये सिर्फ भगवान शिव की ही ब्लेसिंग हो सकती है और कुछ नहीं हो सकता। ये उन्हीं के एक भक्त की कहानी है, तो वही पार लगा रहे हैं इसको। और हिस्टोरिकल तो ये कहानी है ही। मैंने बताया जैसा आपको कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया खुद रिकॉग्नाइज करता है कि ये कनप्पा का गांव है, तो कनप्पा एक हिस्टोरिकल फिगर है और हम इसको फोक टेल कहते हैं। श्री कालाहस्ती मंदिर है तिरुपति में, तिरुपति बालाजी आप सब जानते हैं। वहीं पे शिव जी के 5 मूलभूत लिंगम है, धरती, आकाश, अग्नि, वायु। इसमें ये वायु लिंगम है जो इस कहते हैं कि ये लिंगम जो है ये सांस लेता है। आज भी आप मंदिर जाएंगे तो 2 दिए रखे हुए हैं जो फड़कते हैं उनकी सांसों से। आप बिलीव करें ना करें, आप जाएं मंदिर, आप देख लें। तो ये हिस्टोरिकल फैक्ट है जिसको माइथोलॉजी पहले कहा जाता रहा है। अब मुझे लगता है कि अब सब आप लोग भी हिस्टोरिकल ही कहेंगे क्योंकि हमारे पास प्रमाण हैं इसके। मुकेश जी, जी आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। आप न्यूजीलैंड कितने दिनों के लिए गए थे? मैं लगभग 5 महीने था वहाँ। तो शिव जी वहाँ नहीं आए थे? मुझे लेके नहीं गए वहाँ। वहाँ नहीं पहुँच पाते थे? देखिए, कहते हैं कि हर जीव में शिव है, इसलिए जितने भी जीव वहाँ थे मुझे तो लेके नहीं गए। मेरे अंदर भी शिव जी है, मुझे क्यों नहीं ले गए थे? ऐसे ही पूछो। चलो छोड़ो, आगे नेक्स्ट। जी विष्णु जी, राइटिंग के लेवल पे आपको कितनी डिफिकल्टी था? डिफिकल्टी कुछ नहीं था क्योंकि सी I'll tell you where we started off from. See, this movie was, I'm going to give a little brief history lesson, so I'm sorry. It's going to take 3-4 minutes. See, Kanappa is not a known story for all the people here. I believe the story took place in the 2nd century. The first reference on Kanappa, Adiguru Shankaracharya, while writing the Shiva Purana, made a reference that an Adivasi offered meat to Lord Shiva. That was the first reference of Kanappa. And Kanappa's story was written from there. In Sri Salem, when the Sri Chakra is written, even there, even today, when you go to one of the Jyotirlingas in Hyderabad, near Hyderabad, Sri Salem, it is written there. Long before that, the Vayulinga is there. That's the only linga which is, the base is in the shape of a spider, the sides are of elephant tusks, and on the top is a snake. This is the shape of Vayulinga. Kanappa is a devotee of Shiva in that area. And after 8th century, in the 14th century, one of the greatest kings of India, Sri Krishna Devaraya, in his kingdom, there was this very famous poet called Durjeti. Durjeti wrote poems on Sri Kalahasti Ishvara Mahatyam, which means all the miracles of Sri Kalahasti Ishvara, this temple where the Vayulinga is Sri Kalahasti. And those poems, they were written in these, in Telugu they call it Tatipa Gandralu, means in the palm leaves. I don't know what they call in Hindi. Tadpatra, almost the same. They were lost, and then in the 18th century, there was this English collector called Mr. C.P. Brown, who collected all these and then translated them with scholars into English, and the book was published in 1895. And there are 5 books today which are still in preservation. One of them is in Bikaner Museum. Based on that book, in 1938, a silent film was made called Kanappa Nayanar. And then in 1953, one of the greatest Indian actors, legendary Dr. Rajkumar sir in Kannada,
made his arangetram in films through this movie called Bedar Kanappa in Kannada. And he acted simultaneously in Telugu. In Telugu, it was called Sri Kalahasti Ishwara Mahatyam. The same production company from Chennai made the movie in Hindi called Shiva Bhakt in 1954. And then Bedar Kanappa was again remade in 1976 by legendary directors Mr. Bapu and Ramana with another great Telugu actor, Mr. Krishnam Raju, who happens to be the uncle of Prabhas. And then again, Mr. Rajkumar made that movie in Kannada in 1988, where he played the role of Lord Shiva, and his son, Shivaraj Kumar sir, played Kanappa. And then after 50 years, I believe in Telugu when we first started, Lord Shiva gave me the permission to tell this generation the story of Kanappa. And when I was writing Kanappa, see, the last 30 minutes is the same. An atheist becomes God's devotee and God decides to test him, and it's a known legend that the linga, blood starts coming from the linga, and Kanappa takes his eye out and gives it to Lord Shiva. This is a single pager. For me it's a half pager. Now, who was Kanappa? What was he? Why was he an atheist? For me, it was an open canvas. For me, the canvas was large. And I'm a huge fan of Lord of the Rings. And I've